Welcome students. In this video we are going to start a new exercise of the chapter Introduction to Trigonometry for class 10th. We have dealt all about the trigonometry and we are moving to the last part of the section, last part of the chapter, and now we are going to learn about the trigonometrical identities here. तो हम यहाँ पे trigonometrical identities पढ़ने वाले हैं. तो what are the trigonometrical identities? First look at them. Trigonometrical identities. So trigonometrical identities, firstly let us look what the word identity mean here. We have learned previously, हमने पहले से ही पढ़ रखा है कि कोई भी अगर मेरे पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है that x square plus y square is equal to 0, it is an equation. हाँ, तो मेरे पास अगर एक इक्वेशन लिखी हुई है and if this particular equation is true for all the value of x and y, अगर ये पर्टिकुलर इक्वेशन मेरी x और y की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होगी, देन इट इज नॉट कॉल्ड एन इक्वेशन, इट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी. ये इक्वेशन नहीं कहलाएगी, देन फिर ये क्या कहलाएगी? आइडेंटिटी कहलाएगी. सो वी आर गोइंग टू लुक एट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज. हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की बात करने वाले हैं. देयर वी विल नॉट डील विद दिस x एंड y, वी विल बी डीलिंग विद द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, trigonometrical ratios. So the first trigonometrical identity is sin square theta cos square theta. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. The second one is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. And the third one is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. These are the three identities that we have to learn here, and we can easily prove these identity with the help of the triangle. हमारा जो triangle है right angle triangle, इसकी help से इस identity को हम prove कर सकते हैं. This is hypotenuse, this is height, this is base, and by putting the value and mark it as theta. By putting these values of sin theta, cos theta, we can prove these identities here. So I don't think so there is a need to prove these identities. So मैं अब exercise कराने वाला हूँ, exercise number 8.4, और उसमें के questions deal करते हैं. Then we will learn more about these identities.